Good morning, my dear students of class 12. Your examination is approaching nearby and is knocking your door. So let's recap with certain things which is very important in your examination. So चलिए आज हम इंटीग्रेशन सीखते हैं। किस तरह से इंटीग्रेशन किया जाता है उसे हम सीखते हैं। तो चलो एक चीज, इस इंटीग्रेशन सीखने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि एक ग्रेट एजुकेशनिस्ट जो है उनका नाम है Gottfried Wilhelm Leibniz. From in 17th century, he has discovered the integral calculus independently, or you can say he has cleared the doubts of principle of integration during 17th century. Now coming to the topic, I want to make you understand how to do integration, how to divide integration from different patterns. Suppose if you have a glass means made up of glass, and suddenly from your hand it falls down, then what happens? क्या देखते हो? आप देखते हो कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर चुका है। तो हम क्या करते हैं उस वक्त, उन बिखरे हुए चीज़ों को समेटते हैं। इस समेटने को इंग्लिश में हम कहते हैं समेशन, और यही समेशन का दूसरा शब्द होता है इंटीग्रल। तो चलिए इस इंटीग्रल को जानने से पहले, यह एक पुराना चीज है जो हम समझ सकते हैं, लेकिन एक्चुअली इंटीग्रेशन को अगर हमें डिफाइन करना है, इस इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। सपोज आपके पास एक फंक्शन है fx। जब आप इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालते हो तो एक और फंक्शन आता है, वो x में भी हो सकता है। तो हम तब कहते हैं दैट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ fx। सो इसको अगर सही ढंग से अगर सिंबली अगर हमको लिखना है, चलो तो हम क्या करते हैं, d/dx of fx is equals to fx। अगर ये बनता है, सो दिस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस इज द इंटीग्रेशन, और इस पद्धति को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। तो चलिए अब कुछ और हम सीखते हैं। इसको हम इंटीग्रैंड भी कहते हैं, जिसका हमको इंटीग्रल फंक्शन निकालना पड़ता है। तो अब हम कुछ डेरिवेशन करते हैं। यूं कि मैंने आपको बता ही चुका हूं कि इंटीग्रेशन हम डिफरेंशिएशन से लेके आ सकते हैं। तो चलिए कुछ रिकैप मैं करवाता हूं। क्लास 11 से कुछ डिफरेंशिएशन को लेते हैं, उन डिफरेंशिएशन को लेकर उनका इंटीग्रेशन बनाते हैं, और बनाने के वक्त हमें यही ध्यान में रखना है कि जो इंटीग्रेशन में हम आपको दिखा रहे हैं वो है एक एलिमेंट्री इंटीग्रेशन। इन्हीं एलिमेंट्री इंटीग्रेशन को लेकर हम और भी फॉर्मूलाज बनाएंगे। जिस तरह फिजिक्स में हम देखते हैं कि सर्टेन जो फिजिकल क्वांटिटीज होता है, उन फिजिकल क्वांटिटीज से हम डिराइव्ड क्वांटिटीज बनाते हैं, ठीक वही तरह से हम एलिमेंट्री चीज़ों को लेकर हम टोटल कैलकुलेशन करेंगे, डिफरेंट फॉर्मूलाज भी निकालेंगे, डेरिवेशन करेंगे। चलिए मैं अरुण कुमार आपके साथ। So let us consider a function. The function, let us write the function as we have to find out the differentiation. Here x means with respective to x we are finding out the differentiation, d/dx of, suppose, x to the power of n. So the answer we get is n into x to the power of n minus 1. Again, number 2, we have one more function, x to the power of n plus 3. So differentiation of this, we get n into x to the power of n minus 1, and the differentiation of this 3 is 0. Okay, similarly if we go with d/dx of certain function x to the power of n plus, suppose here it is m, then also
we get the answer n into x to the power of n minus 1 plus 0. So without writing this 0, we can write like this. In case number 1, case number 2, case number 3, we have the same answer. That is n into x to the power of n minus 1, n into x to the power of n minus 1. Here also n into x to the power of n minus 1. That means what we can understand, if we do the integral part, then something we are getting constant in each term. So while doing the integration, when we get certain constant, and this constant when it is added to the integral part, then we say it's indefinite integral. You must be remembering this. My dear students, don't forget to put the constant at the end of your answer. Thank you. तो चलिए एजुकेशनिस्ट के नाम से शुरू करते हैं अपना इंटीग्रेशन। और सबसे पहला डेरिवेशन किस तरह से किया जाता है डिफरेंशिएशन से, चलिए देखते हैं होता है या नहीं। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक फंक्शन, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं x to the power of n plus 1। तो इसका डिफरेंशिएशन का उत्तर निकलता है n plus 1, जो आप 11वीं कक्षा में सीखे हो, into x to the power of n plus 1 minus 1, that is x to the power of n. We get this. Now from this we can see here clear. Now integrating both sides, we get x to the power of n plus 1 is equals to n plus 1 into x to the power of n. This bring this getting multiplied. So with the theorem, we bring this side, it gets divided. That is x to the power of n plus 1 by n plus 1 is equals to integration of. This is the most useful formula for your derivation. My dear, see, this derivation is very simple. So don't get panic, don't get fears of this. So try to understand integration and do wholeheartedly. My only request to you that yes, of course, don't become stereotyped in your education. Try to have a concept and be in depth in integration. So now we see the differentiation function. We know that differentiation of log x is 1 by x. So it gets inverse, that is integration of 1 by x will be log x plus c. Differentiation of e to the power of x is ex. So integration of e to the power of x will be e to the power of x plus c, which I have written over here. Differentiation of a to the power of x log a is equals to a to the power of x. Similarly, integration of a to the power of x will be equals to this. Similarly, already we have learned the differentiation of minus cos x is sin x. So integration of sin x is equals to minus cos x plus c, and vice versa. Like this, we can define the rest. Let us go with next more 4 to 5 elementary trigonometrical function. Okay, now we know that the differentiation of tan x is secant square x. So if we do the inverse of this, we get secant square x, integration of secant square x is equals to tan x plus c. Simultaneously, we can go with this chart in this format, we can complete the table. Also, in this question, you have to see that differentiation of sin inverse x is also equals to the differentiation of cos inverse x, which is equals to 1 by root of 1 minus x square. So finally, the integral of this part, let us write over here plus c plus c. So integral of this part will be sin inverse x plus c or cos inverse x plus c, where c is the constant term. So this is one more important integration is differentiation of tan inverse x or minus cot inverse x is 1 by 1 plus x square. So integration of this will be this. Similarly, differentiation of secant inverse x
is 1 by mod x root over x square minus 1. So integration of this will be secant inverse x plus c or minus cosecant inverse x plus c. So my dear students, these are the elementary table integration. From this integration I am going to show you the different derivatives whose integration can be found out with the help of derivation in my next class.